Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A2Z Softech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A2Z Softech. Now, let's start with the topic. So today we'll discuss direct memory access, DMA. What is DMA? DMA stands for direct memory access. Direct memory access का मतलब क्या होता है? It means of having a peripheral device that control a processor memory bus directly. Means जब processor की buses को आप directly control करते हो using a DMA controller. What is a DMA controller? That is responsible to perform the DMA. Okay. And what is the DMA? DMA is a process in which the processor buses are controlled directly to communicate with the peripheral devices. It is a technique that provides direct access to the memory while the microprocessor is temporarily disabled. Temporarily disabled का मतलब क्या है? That processor is not involved in the process. Processor is bypassed by the DMA controller, and DMA controller is responsible to execute the DMA. Okay, and it is a technique through which we can access memory directly. Second is IO devices are connected to system bus via special interference circuit known as DMA controller. जो IO devices है means peripheral devices है, input devices जितनी भी हैं वो सभी एक DMA controller interface है जिसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं. In DMA both CPU and DMA controller. DMA controller is also a kind of CPU. वो भी एक प्रोसेसर ही होता है. दोनों के पास एक्सेस होता है मेन मेमोरी का वाया शेयर्ड सिस्टम बस हैविंग डेटा एंड एड्रेस कंट्रोल लाइंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? The meaning of this is CPU and DMA controller both have access to main memory. Main memory मतलब RAM. और ये एक्सेस कैसे होता है? Via shared system bus. Shared system bus means multiplex system bus होगी. Data bus, address bus जो है उसको शेयर करता है DMA controller and CPU. Address and control lines. तीन तरह की बसेस होती है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस. इन तीनों को शेयर करता है कौन? CPU एंड DMA. It is sometimes referred to as a channel. इसको channel बोलते हैं. Channel मतलब channel is a medium. Channel is what? It is a medium because it is responsible to execute this process. In an alternate configuration, the DMA controller may be incorporated directly into a IO devices. मतलब DMA controller IO devices से directly भी communicate कर सकता है, connected होता है. A DMA controller temporarily borrows the address bus from CPU. Okay? क्योंकि बसेस का बाय डिफॉल्ट कंट्रोल किसके पास रहता है? सीपीयू के पास. तो डीएमए कंट्रोलर क्या करता है? वो टेम्परेली बोरो करता है सीपीयू से बसेस को, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, एंड ट्रांसफर्स द डेटा बाइट्स डायरेक्टली बिटवीन आईओ पोर्ट एंड सीरीज ऑफ मेमोरी लोकेशंस. मींस जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना हो उनको डायरेक्टली एक्सेस प्रोवाइड करता है डीएमए कंट्रोलर. ओके, डीएमए कंट्रोलर फर्स्ट generates a request to CPU that it needs buses. उसको buses की requirement है so that CPU buses grant करता है DMA controller को. then DMA जो है वो अपना execution process जो है उसको complete करके buses को वापस CPU को hand over कर देता है. Okay. The DMA is direct memory access. This transfer is also used to do high speed memory to memory transfer. If you want to transfer any data or any content from one memory location to another memory location, then it can also use DMA. Okay. In other words, you can say that any data transfer, whether it is from IO to memory or memory to memory, can be done by the help of DMA, in which no data manipulation or no processing happens. अगर processing और manipulation कुछ नहीं है
तो आप डीएमए कर सकते हो, बिकॉज मैनिपुलेशन का या प्रोसेसिंग का जो काम है वो प्रोसेसर का है, उस केस में प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट रहती है. एंड इफ यू वांट टू जस्ट ट्रांसफर द डेटा, इन दैट केस डीएमए कैन परफॉर्म. ओके, डीएमए ट्रांसफर कैन बी डन इन टू वेज. दो तरीके से डीएमए हो सकता है. कौन कौन से? डीएमए ट्रांसफर ब्लॉक एंड साइकिल स्टीलिंग. डीएमए ट्रांसफर ब्लॉक्स एंड साइकिल स्टीलिंग, ये दो तरीके होते हैं जिसमें डीएमए काम कर सकता है. ओके, नेक्स्ट इज सी how it works. Like there is a processor, main memory, all are connected with system bus. Here's a DMA controller connected with disk. Disk means secondary memory. Another DMA controller connected with network interface. अगर आपको network से data transfer करना है, this is optional. This is optional. ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. Okay. Then peripheral devices कौन सी connected है यहाँ पे? Printer and keyboard. So DMA या disk controller क्या करेगा? वो disk को control करता है. It will generate a request to DMA controller that processor please freeze the buses. Buses को free करेगा. Then it will transfer the data with the main memory or within the memory to memory, or also from keyboard to memory. What is the need of DMA? The need of DMA is because it's an important aspect of governing the computer system performance. If a huge data is transferred between two memory locations or IO to memory, and there is no need of processor for that, but processor is unnecessarily busy or unnecessarily taking the data and sending that data without any processing or without any manipulation, then the time time for CPU is wasted. Time for CPU is wasted. Why so? Because CPU उसमें काम तो कुछ भी नहीं कर रहा, unnecessarily busy हो रहा. So CPU unnecessarily busy ना हो, उसके लिए हम DMA परफॉर्म करते हैं. Okay, is the transfer of data between memory and IO devices. The operation involves loading programs or data files from disk into memory. Disk मतलब secondary storage and memory मतलब primary storage. Okay, ये ऑपरेशन क्या करता है? सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में डेटा डालता है. सेविंग फाइल ऑन डिस्क, accessing virtual memory, pages on any secondary storage medium means any kind of data on any kind of storage medium. डीएमए क्या करेगा? किसी भी तरह के डेटा को जो किसी भी मीडियम पे प्राइमरी या सेकेंडरी स्टोर होता है उसको मेन मेमोरी में लोड करता है. ओके, द प्रोसेस वुड बी मच क्विकर इफ वी कुड बाईपास द सीपीयू. अगर सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होगा, सारा डेटा मेमोरी से उठाकर मेमोरी में या आईओ से उठाकर मेमोरी में, मींस location to location transfer is there. CPU is not doing any processing, or CPU is not involved in any between these operation. Then direct memory access does this exactly. यही काम होता है कि वो CPU को bypass करता है और डेटा को ट्रांसफर करता है डायरेक्टली फ्रॉम IO टू मेमोरी. ओके, ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर CPU is idle and no control of the memory buses. जब भी डीएमए होता है उसमें सीपीयू बिल्कुल आइडल होता है, खाली होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता, सीपीयू कोई प्रोसेसिंग नहीं चल रही होती, एंड सीपीयू के पास बसेस का कंट्रोल भी नहीं होता, बिकॉज सीपीयू ऑलरेडी बसेस का कंट्रोल हैंड ओवर कर चुका होता है किसको? डीएमए कंट्रोलर. नेक्स्ट इज डीएमए वर्सेस नो डीएमए. कब डीएमए कर रहे हैं? केस में हम डीएमए को कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे केस में हम डीएमए को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन? जब डीएमए नहीं है, विदाउट डीएमए, when the CPU is using programmed input-output devices, it is typically fully occupied for the entire duration of the read or write operation and is thus unavailable to perform other work. जब डीएमए नहीं है, it means प्रोसेसर इन्वॉल्व होगा उस ट्रांसफर में. जब तक प्रोसेसर ट्रांसफर में इन्वॉल्व होगा तब तक प्रोसेसर कुछ और काम नहीं कर सकता. ओके, नाउ इन केस ऑफ डीएमए, जब डीएमए के साथ हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो क्या होता है? द सीपीयू इनिशिएट्स द ट्रांसफर. एक बार ट्रांसफर को शुरू करके सीपीयू पीछे हो जाता है एंड अपने बाकी ऑपरेशंस करने शुरू कर देता है. द सीपीयू इनिशिएट्स द ट्रांसफर, does other operations while the transfer is in progress and receives an interrupt from DMA controller when the operation is done. जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट होता है, सीपीयू पर इनिशिएट तो करता है उसको और उसके बाद फ्री करके अपनी बसेस को वहां से अपने बाकी जो भी टास्क होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है. जैसे ही
डीएमए कंप्लीट होता है, डीएमए कंट्रोलर एक इंटरप्ट जनरेट करता है, दैट डीएमए इज फिनिश्ड, नाउ यू कैन टेक ओवर द बसेस। जब ये इंटरप्ट सीपीयू के पास आती है तो सीपीयू बसेस को वापस अपने चार्ज में दे देता है। नाउ इन बोथ द केसेस व्हाट इज हैपनिंग, in first case without DMA, the CPU is unavailable to the whole time. Like if the transfer executes for 2 minutes, then CPU will be unavailable for 2 minutes, and if the transfer is of 2 hours, then CPU is busy for 2 hours. But in case of DMA, whether the transfer takes 2 minutes or 2 hours, the CPU just initiates the work, and then CPU will be back to its execution. In both the cases, the difference is in first CPU is busy for the whole time, and in second cases CPU is free for the whole time. So this feature is useful anytime the CPU cannot keep up with the rate of data transfer. क्योंकि जो data transfer है वो CPU का काम नहीं है. Where the CPU needs to perform useful work while waiting for a relatively slow IO data transfer. उतनी देर में CPU क्या करेगा, कोई अपना यूजफुल टास्क को एग्जीक्यूशन के पेंडिंग वर्क उसको कंप्लीट कर लेगा rather than waiting the data from IO devices. Now, how DMA initializes? DMA controller require initialization by software. DMA controller का एक सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले बस रिक्वेस्ट जनरेट करेगा. रिक्वेस्ट जो हो गया वो प्रोसेसर के पास जाएगी, प्रोसेसर उसको हैंडल करेगा. अगर बसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोसेसर को, देन प्रोसेसर बसेस की अवेलेबिलिटी डीएमए कंट्रोलर को दे देगा, एंड देन दिस ऑपरेशन विल एग्जीक्यूट. नाउ सी हाउ इट इज वर्क्स. Typically setup parameters include the base address of the source area. कहाँ से आपको डेटा रीड करना है उसका बेस एड्रेस रहेगा. द बेस एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन एरिया, कहाँ से आपको डेटा लेना है, कहाँ आपको डेटा देना है. द लेंथ ऑफ द ब्लॉक एंड whether the DMA controller should generate a processor interrupt once the block transfer is complete. सोर्स लेगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस लेगा और लेंथ लेगा. ये तीन चीजें होंगी. कहाँ से डेटा लेना है, कहाँ डेटा देना है और कितना डेटा है. ओके, उसके बाद सीपीयू जो है इस काम को छोड़ देगा, बस इसको छोड़ देगा. जब भी ब्लॉक डेटा ट्रांसफर मीन्स कंप्लीट डेटा ट्रांसफर होगा तो एक इंटरप्ट जनरेट हो जाएगी प्रोसेसर को. कौन जनरेट करेगा? डीएमए कंट्रोलर. ओके. The first is types of DMA transfer. First one is DMA transfer block. Complete block is transferred. In this mode, DMA controller is master of memory bus. This mode is needed by secondary memory like disk drives. जो secondary memory, auxiliary memory है वहाँ use होती है. That have the transmission and are not to be stopped or slowed without any loss of data transfer of blocks. Means secondary storage से data transfer होगा और उसमें कोई भी data मिस नहीं होगा. कोई डेटा ट्रांसफर में जो भी ब्लॉक्स ऑफ ट्रांसफर है उसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा. ब्लॉक डीएमए ट्रांसफर सपोर्ट्स फास्टर आईओ data transfer rates, but the CPU remains inactive for a relatively long period by tying up the system bus. Block data transfer क्या होता है? फास्ट होता है because complete block is transferred in one cycle. Okay, पूरा का पूरा ब्लॉक आप एक साथ ट्रांसफर करते हो. एंड डीएमए है तो सीपीयू रिमेन्स इनएक्टिव, सीपीयू इधर कोई काम नहीं करेगा. सेकेंड इज साइकिल स्टीलिंग. साइकिल स्टीलिंग में क्या होता है? System allows DMA controller to use system bus to transfer one word, after which it should return back control of bus to CPU. Now, cycle stealing में क्या होता है? एक एक word करके transfer होता है. Data is further divided into small parts, and those parts are called as word, and the words are transferred. After transferring each word, the CPU will take over the bus. ओके. सो डीएमए कंट्रोलर बार बार रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, सीपीयू बार बार उसको ग्रांट करेगा. ओके. तो इसमें क्या होगा, जब जो डेटा ट्रांसफर पहले हो रहा था पूरा पूरा ब्लॉक एक साथ ट्रांसफर हो रहा था, अब क्या हो रहा है एक एक वर्ड ट्रांसफर हो रहा है और हर वर्ड के बाद कंफर्मेशन लेनी पड़ रही है बसेस की. सो इट रिड्यूसेस द ट्रांसफर रेट. इससे ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द इंटरफेरेंस ऑफ डीएमए कंट्रोलर. डीएमए कंट्रोलर का जो मेमोरी एक्सेस है उसको भी रिड्यूस करेगा वाइसो, बिकॉज ईच टाइम डीएमए कंट्रोलर को रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ रही है विद न्यू एड्रेस. फर्स्ट केस में क्या था? बेस एड्रेस लिया अपने सोर्स का, बेस एड्रेस लिया डेस्टिनेशन का, एंड लेंथ ले लिया. कंप्लीट पूरा डेटा एक साथ ट्रांसफर होगा. बट इन दिस केस स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जो है वो ट्रांसफर होंगे.
It is completely eliminated by designing DMA interface so that system bus cycle are stolen only when CPU is not actually using system bus. तो इसको हम कब एग्जीक्यूट करते हैं जब CPU बस इसको यूज नहीं करता, सिर्फ तब ये काम करते हैं. It is also called transparent DMA. Why it is transparent DMA? Because each and every time the DMA controller generates the request, sends the request to the CPU, and then CPU executes that request. Okay, so it is a transparent DMA. साइकिल स्टीलिंग इज आल्सो नोन एज ट्रांसपेरेंट डीएमए. तो बेसिकली अगर नाम आता है साइकिल स्टीलिंग तो भी ये लिखेंगे, अगर पूछते हैं आपसे ट्रांसपेरेंट डीएमए तो भी यही चीज लिखी जाएगी. नाउ डीएमए कैसे वो करता है, सी द ब्लॉक डायग्राम. इज द प्रोसेसर, this is the memory, this is the peripheral device, and this is the DMA controller. Peripheral devices are connected with data bus, address bus, control bus. There are three buses: address bus, data bus, control bus. All these three buses are connected with the peripheral and DMA. DMA सबसे पहले क्या करेगा, पेरिफेरल डिवाइस एक DREQ मतलब डेटा रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के पास. कंट्रोलर एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा प्रोसेसर के पास. HRQ प्रोसेसर रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, सॉरी डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट जनरेट करेगा प्रोसेसर के पास. प्रोसेसर के होल्ड सिग्नल पर ये रिक्वेस्ट रिसीव होगी. देन होल्ड एक्नॉलेजमेंट, HLD स्टैंड्स फॉर होल्ड एक्नॉलेजमेंट. प्रोसेसर जब इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा तो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा डीएमए कंट्रोलर को. When the DMA controller receives the acknowledgement, it will send acknowledgement to the peripheral device. When the peripheral device receives the acknowledgement from DMA that you can do DMA now, then the data buses of peripheral devices will directly connect with the data bus of memory, and now data will be transferred in between peripheral device and memory. This will execute. In between, if processor generates any interrupt or DMA generates any interrupt, then this process will be terminated and the control of the buses will be transferred to the processor. Clear to everyone? Next is डेटा ट्रांसफर के ब्लॉक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो मैंने भी आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया है उसी में. टू सिग्नल्स आर यूज्ड टू रिक्वेस्ट and acknowledge the DMA. Hold signal is a bus request. HLDA, hold acknowledgement, is a bus grant. DRQ is DMA request or data request. DACK is DMA acknowledgement. So DACK is what? DMA acknowledgement. It acknowledges that DMA is ready to perform. Okay, and when DMA is ready to perform, then only the peripheral devices will send the data to memory. इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएमए कंट्रोलर. डीएमए कंट्रोलर के पास क्या क्या रहता है, डीएमए कंट्रोलर के पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं. कौन कौन से? डीएमए एड्रेस रजिस्टर. इट कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस टू बी यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर व्हिच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन. डीएमए काउंटर रजिस्टर कितना वर्ड, कितना डेटा आपने ट्रांसफर करना है. डीएमए कंट्रोल रजिस्टर, इट कमांड्स फ्रॉम सीपीयू. इट इज आल्सो treated as an output put by the CPU. मीन्स जो भी कंट्रोल सिग्नल सीपीयू के पास है वो उन सबका चार्ज वो डीएमए कंट्रोल रजिस्टर में दे देगा. यहाँ इस पर्टिकुलर पोर्ट पर आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. डीएमए डेटा रजिस्टर आर यूज्ड टू स्टोर इंटरमीडिएट डेटा वैल्यूज. पेरिफेरल डिवाइस से डेटा निकला, मेमोरी तक डेटा जाएगा, इन बिटवीन वो डेटा कहाँ रहेगा? डीएमए डेटा रजिस्टर. नाउ डीएमए डेटा ट्रांसफर. डीएमए डेटा ट्रांसफर कैसे होता है? सबसे पहले एक डीएमए रिक्वेस्ट जनरेट होती है. वो रिक्वेस्ट प्रोसेसर के होल्ड सिग्नल पे जाती है. देन प्रोसेसर होल्ड एक्नॉलेजमेंट से डीएमए कंट्रोलर को बताता है. देन डीएमए कंट्रोलर डीएमए एक्नॉलेजमेंट देता है बैक टू आईओ डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस. ये चार सिग्नल हैं जो डीएमए से पहले परफॉर्म होते हैं. सबसे पहले डीएमए रिक्वेस्ट, देन होल्ड एक्नॉलेजमेंट, देन डीएमए एक्नॉलेजमेंट. देन डीएमए कंट्रोलर प्लेसेस द मेमोरी एड्रेस ऑन द एड्रेस बस. एड्रेस चेक करेगा कौन सा एड्रेस है, उस एड्रेस को एड्रेस बस में लोड करेगा. नाउ एड्रेस विल बी सिलेक्टेड. अब वहां डेटा जाएगा. सो डीएमए कंट्रोल अपडेट्स द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड वर्ड काउंट रजिस्टर. कितना वर्ड ट्रांसफर करना है, किस एड्रेस पे करना है, दोनों चीजें आ गई. व्हेन डीसी रजिस्टर एंड डेटा काउंट रजिस्टर. ओके,
becomes 0, DMA controller sets hold 0. जब डेटा काउंट 0 हो जाता है तो आपका होल्ड पर जो रिक्वेस्ट आई थी वो भी टर्मिनेट हो जाती है. जैसे होल्ड की रिक्वेस्ट टर्मिनेट होगी, इट मींस DMA इज फिनिश नाउ. सो डेटा ट्रांसफर प्रोसेस टर्मिनेट होता है एंड प्रोसेसर regain the control of the system bus. So the process कैसे हो रहा है? सबसे पहले रिक्वेस्ट आई, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट आ गया, देन एड्रेसेस सेट हुए. आफ्टर एड्रेसेस मेमोरी का वर्ड साइज, क्या वर्ड है, कितने वर्ड्स हैं, कहाँ से ट्रांसफर हो गए, ये सब अपडेट होगा. आफ्टर दैट व्हेन द डेटा काउंट रजिस्टर बिकम्स 0 मींस कंप्लीट डेटा ट्रांसफर हो गया, तो डीएमए ने जो रिक्वेस्ट जनरेट की थी होल्ड सिग्नल पे उसको भी रीसेट करेगा, यानी कि होल्ड को 0 करेंगे. आफ्टर दैट डेटा ट्रांसफर प्रोसेस टर्मिनेट्स. जैसे ही डेटा ट्रांसफर खत्म होगा, प्रोसेसर के पास बस इसका कंट्रोल वापस आ जाएगा. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डीएमए. DMA allows peripheral device to read from write to memory. Means DMA क्या करता है, या तो रीड कर सकता है या राइट कर सकता है मेमोरी से. दोनों दोनों काम कर सकता है विदाउट गोइंग थ्रू द सीपीयू. सीपीयू को इन्वॉल्व किए बिना आप डेटा रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो. इट ऑल्सो अलाउज फॉर फास्टर प्रोसेसिंग since the processor can be working on something else while the peripheral can be populating the memory. Means DMA ये भी अलाउ करता है कि प्रोसेसर अपना और कोई काम कर ले, बिकॉज प्रोसेसर इन्वॉल्व नहीं है ट्रांसफर में. सो प्रोसेसर कोई और काम कर सकता है जितनी देर में पेरिफेरल डिवाइस से डेटा मेमोरी में लोड होता है. These are the advantages of DMA. Now the disadvantages of DMA is DMA transfer requires a DMA controller. एक एडिशनल हार्डवेयर की आपको जरूरत है. ओके, एडिशनल हार्डवेयर लगाओगे तो उससे आपके सिस्टम की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी. फॉर एग्जांपल डीएमए कंट्रोलर की जो कॉस्ट है वो ऐड ऑन हो जाएगी अब आपके सिस्टम के साथ. ओके, तो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट. कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम. कैशे कोहेरेंस मतलब कैशे के साथ डेटा को साइमल्टेनियसली सिंक्रोनाइज करने में प्रॉब्लम आती है. कैशे में कभी कोई डेटा आ रहा है, बिकॉज प्रोसेसर कोई काम कर नहीं रहा है, तो कैशे जो उसकी मेमोरी है प्रोसेसर की, वो डेटा लेगी किसी और से जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है. बट जो भी करंट एग्जीक्यूशन लाइक डीएमए में, तो कभी वो डेटा भी कैशे में जा सकता है. सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल एग्जीक्यूट इन द डीएमए. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.